Hello everyone, a very good evening and welcome back to my YouTube channel, The Powerhouse Ideas. In this video, like as I used to do earlier, learning is something which everyone should get. I have taken positions. This one I have taken position earlier only, like this one which you see on the screen. This is something which I shared last week only, and my position is opened till since then only. But I'll do in this video, I'll be sharing three stocks, three good looking stocks which have a possibility of an upside, and why there is a possibility of upside, what is the analysis, what is the learning behind that. I'll also share that, so that you need not pay any paid memberships to any of the Telegram, to any of the Twitter, and any of the handles. So my motive was earlier also that you should not pay for something which is readily available, and trading is very simple if we don't complicate it. So basically I'll be sharing four picks with you, four stocks, not four, three, or let me do four only, one for a bonus. So I'll be sharing four stocks with you in which I'll tell you that why the entry seems to be triggered. I'll be also be adding a pinch of Gann study into this, GANN, Gann theory into this, so that it adds a more confirmation to that, to the price action basically. So this stock, which you are able to see on the screen, the name is BSE, Bombay Stock Exchange. And this stock came into my radar on 8th of October 2024, like roughly a month before, when it was breaking out of this level. So as a trader, my personal trait is that I don't enter into a stock mostly on breakouts. I don't like breakouts. I don't know why. That's my inherent, you can say, psychology, which doesn't allow me to trade breakouts so convincingly. I just want a position wherein the stock is not broken out and the risk to reward is too good. Risk to reward is better, because in breakouts, the risk to reward is not that good usually, because there is always a retest of the breakout in most of the scenarios. So I avoid taking breakouts, but because it unnecessarily take my stop losses, and also keep stop losses very smaller. So that's one of the reason why I don't trade breakouts. So since October 2024, this stock came into my radar, and after that I again reshared this stock in Diwali tight range stocks when the stock was trailing somewhere over here. Now the stock is seeing to show some kind of breakout happening. Now, what is the analysis of this stock? I'll tell you very clearly on the charts. Now, the first and the foremost thing which you always have to see is that whether what is the risk and what is the reward offered by the stock, and what is the trend exactly. So, if you see the stock after being in a range over here, broken out of this level, and then started showing higher highs and higher low. So we all of us know that stock moves in this direction when it creates a uptrend pattern. So this is one thing, that the stock is in an overall uptrend. After that, after giving this big breakout and this big move along with this big volume, which can be generated by only by big players, the stock took a breather and consolidated for a good number of days. This showed that the stock has created a base over here, and after that the stock is trying to move up. Now for this we need to have some drawings on the chart. That is very, very important. You need to identify some of the swing highs. So I'm putting some of these swing highs along with the help of these lines. Let me just show you. That's also there is also a reason why I'm marking these. So now this seems complicated to you, isn't it? So let me clarify this to you, that why this is not complicated. Let us go to the smaller time frame for that. Now see, I have defined some of these lines on daily time frame, and see the importance of these lines on a 2 hourly or a smaller time frame. These are effectively the swing highs from where we saw a good downward movement in the stock. If you see over here, over here, then over here. Now effectively, now coming back to the daily time frame, the stock has effectively, not yeah, daily time frame, the stock has effectively closed above, all these swing highs. Let me remove this, just a minute. Okay, so stock has effectively today closed above all the recent swing highs. That's very clear on the chart, right? So basically there were three swing highs on smaller time frame which were in the form of wick rejections from the top. So basically one more learning over here, when you have this kind of candle, this kind of candle is a wick rejection on daily, but on, you can say, smaller time frame, it's a swing being created. You understand? Because in every bigger time frame there is a smaller time frame trend also, right?
So basically the stock has given a breakout of that level, and second important thing is that the volume which came over here, now the volume has started, like it's, I would not say this volume is too humongous or too big, but the volume has started showing up. From the last 2 days the volume was almost dried up, and today it's more than the last 2 days volume. So this stock looks on the chart, looks good on the chart. One point, it's in on a daily uptrend. After creating a small base, it's trying to break out, and the other technical parameters which we just saw. Now let us move quickly to the next stock, that is, okay, that is, I also took an entry over here, Deepak Fertilizers, yeah. So now let us understand this stock. In this you also see that I have put some Gann theory over here. I'll explain you that also. Now basically let us understand the rationale. This stock exactly came into my radar when it was breaking out during these days. I have a private scanner, which is a paid subscription from charting, paid for myself, not for any others. Like I've taken a paid subscription where I've made a scanner which shows me all the breakouts happening. So basically this stock came into my radar when this breakout was happening, but I was not happy to trade it at that time, just because of the same reasons that I don't trade stocks with like a spoiled RR बहुत अच्छी होनी चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, देन ओनली आई ट्रेड इट. सो सिंस देन ये स्टॉक मेरी रडार में था, एंड आफ्टर बीइंग इन माई रडार स्टॉक एक मेजर गान एरिया है. मेजर गान एरिया आप देख सकते हो, इस मेजर गान एरिया में आके टकराया, एंड टकराने के बाद इसमें फॉल मुझे एक्सपेक्टेड था, लेकिन ऐसा फॉल नहीं आया. ठीक है, तो हमें पता है कि स्टॉक ओवरऑल एक अप ट्रेंड में है, एक अच्छा ब्रेकआउट है अच्छी वॉल्यूम के साथ. यहाँ पे मुझे एक रिट्रेसमेंट की उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद पूरी नहीं हुई, एंड स्टॉक हल्का सा रिट्रेस करने के बाद दोबारा से हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है. आप देख सकते हैं, 2 मिनट आप वेट कीजिए. लेट मी जस्ट गेट द पेन बैक अगेन. ओके, इट्स बैक. ऑलराइट, सो बेसिकली स्टॉक यहाँ से दोबारा हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, अगेन विद इंक्रीज्ड वॉल्यूम. नो द पॉइंट इज, यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ी सी स्पॉइल्ड है, क्योंकि मैंने आपको पिछले स्टॉक में बताया, BSE में बताया कि जब चार्ट ऐसे चलता है तो मैं यूजुअली यहाँ पे उठाने में कोशिश करता हूँ, लेकिन हम इसमें अभी इस पोजीशन पे छोटा सा पुल बैक है, जैसे हम ये वाला नहीं एरिया कहते हैं, हम कहते हैं इस एरिया में ये स्टॉक है. नाउ द रिस्क मैनेजमेंट गेट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैंने क्या किया है, मैंने इसमें आज 1316 पे एंट्री बनाई है, एंड स्टॉप लॉस रख लिया एग्जैक्टली 5% नीचे. अगर स्टॉक 5% ब्रेकडाउन होता है, देन दे आर वेरी हाई चांसेस कि स्टॉक यहाँ पे एक अच्छी रेजिस्टेंस बना लेगा, एंड स्टॉक हमें वापस इस लेवल में मिल सकता है, एटलीस्ट टिल द लेवल ऑफ 1100. सो ये दूसरी ट्रेड है जो मैंने बनाई है, जस्ट बिकॉज ऑफ द गुड वॉल्यूम कमिंग अप, द ओवरऑल ट्रेंड इज अप, एंड विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट. लेट अस गो टू द थर्ड ट्रेड विच आई हैव मेड टुडे, दैट इज आधार हाउसिंग. आई विल एक्सप्लेन यू द रीजंस व्हाई. Now again over here you see that there is a Gann chart applied over here. Now the point is I have just told you that मैं स्टॉक को बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड में उठाने में बिलीव करता हूँ. I'll tell you what analysis I like saw in this chart, particular chart. So basically हम इसके broader उस पर जाएंगे, broader patterns पे. आप देख सकते हो कि स्टॉक कुछ इस तरह का पैटर्न बना रहा है, एंड हमें पता है कि स्टॉक हमेशा जो ऊपर जाता है तो इस तरह के पैटर्न बनाता ही ऊपर जाता है. तो इफेक्टिवली हम इस वाले एरिया पे हैं, मतलब हम इस वाले एरिया पे हैं. अब मुझे कैसा लग रहा है कि ये वाला एरिया कंप्लीट हो गया, एंड स्टॉक अपने इस वाले हाई को ब्रेकआउट कर सकता है. आई विल ऑल्सो टेल यू द रीजन. हमने देख लिया कि चार्ट कहाँ पे खड़ा है इस समय. उसके बाद अगर आप ये देखो, ये वाली कैंडल, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू. ये वाली कैंडल जो थी जिसमें मैंने येलो लाइन बनाई है, इसमें एक बहुत ह्यूज हमें वॉल्यूम देखने को मिली थी, एंड उसके बाद स्टॉक ने ऊपर चलना शुरू कर दिया था, एंड इफेक्टिवली स्टॉक ने एक बेस भी बनाया. दिस शोज कि हमें कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन होती हुई दिख सकती है, एंड एक रिवर्सल अच्छा हमें आता हुआ दिख सकता है, बिकॉज फ्रेश वॉल्यूम हैज स्टार्टेड शोइंग अप. यहाँ पे हमें फ्रेश वॉल्यूम दिखी थी यहाँ पे, लेकिन उसके बाद स्टॉक ने एक नीचे जाके एक लो बनाया, एंड स्टॉक रिकवर करके एक हायर लो हमें बनाता हुआ दिख रहा है. तो इस स्टॉक में हमें ये बहुत क्लियरली पता है कि जो मेजर ट्रेंड है वो कुछ इस तरह से है. हमें ऐसी फॉर्मेशन की उम्मीद है, एंड उम्मीद है कि स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को ऊपर क्लोजिंग दे जाएगा. इस चार्ट में एक और बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है. अगर आप अर्ली एंट्री नहीं बनाना चाहते हैं किसी भी स्टॉक में, तो आपको एक मेजर स्विंग हाई को आइडेंटिफाई करना है. मैंने एक्जैक्टली स्विंग हाई को आइडेंटिफाई किया. अगर आप इसे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो आपको एक बेसिकली एक ट्रेंड दिखेगा यहाँ पे, जो यहाँ से रिवर्स हुआ होगा. तो अगर इस स्टॉक यहाँ से ऊपर क्लोजिंग देता है छोटे टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे, दैट कैन बी अ ब्रेकआउट एंट्री. बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मेरे को ब्रेकआउट्स लेना पसंद नहीं है. जहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड छोटा निकल के आएगा, मैं वहाँ पे एंट्री बनाऊंगा. तो आप देख सकते हो इसमें सिर्फ 3.5% का
रिस्क निकल के आया है, उसमें दो कॉन्फ्लुएंसेस है मेरे पास। एक तो एक छोटा बेस जो इन्हें बनाया, इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस रख दिया, प्लस एक इंपॉर्टेंट गान लेवल के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था ये मुझे, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एंट्री बनाई। द लास्ट स्टॉक फॉर टुडे इज विच आई विल बी डिस्कसिंग विद यू इन डिटेल, इट इज, लेट मी सी विच आई नोटेड इट डाउन। ओके, द लास्ट स्टॉक फॉर टुडे इज, एंड आई होप आपको कुछ लर्निंग मिली होगी, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट स्टॉक है एक। Now again, this is kind of similar trade to what we saw just now, that is Aadhar Housing. So basically दोनों अगर आप ये भी ध्यान दें तो दोनों almost same sector से हैं. This is also real estate, that is also like connected to real estate. ठीक है, that's Aadhar Housing Finance, this is real estate stock. So basically अगर हम देखें तो overall again it's an uptrend, that should be the basic priority. अगर हम सिर्फ छोटा सा पैटर्न देखें तो स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, बड़ी मूव, अच्छी वॉल्यूम के बाद एक और फिर रीटेस्ट, सॉरी ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। आई वेटेड इट फॉर कमिंग डाउन एग्जैक्टली एट दिस एरिया, इट हैज स्टार्टेड शोइंग वॉल्यूम्स अगेन। नाउ द पॉइंट इज, यहाँ पे वॉल्यूम आ रही है, मैं ब्रेकआउट की वेट नहीं करूँगा, मैंने इसमें यहाँ पे एंट्री बनाई है, एंड आप देख सकते हो मैंने येस्टरडे एंट्री बनाई थी इसमें, एंड स्टॉक ऑलरेडी आज ऊपर क्लोज हुआ है ओनली 1%। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हमें पता है कि स्टॉक एक ओवरऑल अप ट्रेंड में है, हम दोबारा से यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हैं स्टॉक ओवरऑल एक अप ट्रेंड में है, एंड अप ट्रेंड में होने के बाद स्टॉक एक बेस से बाउंस कर रहा है, बेस से बाउंस करने के बाद वॉल्यूम अच्छी आ रही है, प्लस हमें ये पता है कि इस चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग मेरा रिस्क कितना निकल के आ रहा है, ओनली 5%। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं 5% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ किसी भी चार्ट के अंदर, एंड जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम निकल के आ रही है, अगर इसने अपने हाई को भी टच करना है, दैट कम्स अराउंड मिनिमम 2.5, दैट इज 1:2.5। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ 5 गुड लुकिंग स्टॉक्स, जिसमें से 2 स्टॉक एक ही सेक्टर में से थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप किसी स्टॉक का एनालिसिस करने में मुश्किल लग रहा है आपको, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, मैं कोशिश करूँगा उसकी वीडियो बना दूँ। एंड अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हैं। एंड द ओनली रिक्वेस्ट इज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, दैट्स दिस द ओनली थिंग विच विल हेल्प मी कंटिन्यू दिस लर्निंग सीरीज़। एंड बिकॉज मेरी मोटिवेशन बहुत जल्दी चली जाती है जब मैं 40-50 व्यूज़ देखता हूँ सिर्फ, दैट इज़ नॉट डिज़ायर्ड। सो अगर वो आप चाहते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, सो दैट मैं लर्निंग को कंटिन्यू रख सकूँ, एंड जिस तरह से मैं मार्केट से प्रॉफिटेबल हूँ आपको भी बना सकूँ। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।